The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with India to International and make your NDMS and MBBS dreams come true. A very good evening to all the viewers. I welcome you all back to our channel. This is Naveen Harjuani here from India to International. First of all, I would like to lay my gratitude towards your support. Thank you for your viewership and मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा. Uh, as you can see it on your screen, this is a letter which is being written by MCC to all the participating institutes under MCC counseling. Now, this letter says institutes participating in UG Counseling 2023 are hereby informed that intra MCC portal for the contribution of UG seat is already open. Intra MCC portal is for every institute, whoever participates under MCC counseling. This is exclusively for the institutes. They have their login ID, passwords, and it is exclusively only for the institutes. Uh, one, no one else can go through intra MCC portal. Okay, so this is strictly between MCC and the institutes. And here, what the letter says, hence the institutes are requested to start entering their seats on the portal at the earliest so that the process of the seat contribution can be completed timely, as the UG 2023 is expected to start from mid of July. Now, this is like we have a rough idea that we are anticipating the counseling to begin by mid of July. मैं हिंदी में आपको समझा देता हूँ. ये बेसिकली ये लेटर है एमसीसी ने ये लेटर भेजा है हर एक इंस्टीट्यूट को, हर एक मेडिकल कॉलेज को, हर एक यूनिवर्सिटी को जो अपने स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं एमसीसी काउंसलिंग के द्वारा. एमसीसी ने क्लियर एक इंस्ट्रक्शन कर दी है कि इंट्रा एमसीसी पोर्टल, ना इंट्रा एमसीसी पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जो हर एक कॉलेज को एक रिस्पेक्टिव लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है. इंट्रा एमसीसी एक वेबसाइट है और हर एक कॉलेज का एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है और उसी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ अपना फी स्ट्रक्चर, अपना बॉन्ड का जानकारी, अपने नंबर ऑफ सीट्स की जानकारी, अपने फी स्ट्रक्चर, अपने एनआरआई फी स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग इंट्रा एमसीसी पे अपलोड करते हैं और वही एमसीसी आपको दिखाता है वाइल डूइंग योर चॉइस फिलिंग या प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग और एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग. तो यहाँ पे क्लियरली एमसीसी ने कह दिया है कि इंट्रा एमसीसी पोर्टल ओपन है. हर एक कॉलेज अपनी डिटेल्स डाल सकता है, अपने फी स्ट्रक्चर्स अपलोड कर सकता है, नंबर ऑफ सीट्स क्या है, नंबर ऑफ एनआरआई सीट्स क्या है, सब कुछ अपलोड कर सकता है ताकि टाइमली काउंसलिंग शुरू हो पाए. एंड द काउंसलिंग इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट फ्रॉम मिड ऑफ जुलाई. सो एक रफ आइडिया आ गया है कि 15 जुलाई के आसपास काउंसलिंग हो सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा 20 तारीख तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लेट होते होते 20 जुलाई तक काउंसलिंग शुरू हो सकती है. आई होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज यूजफुल टू यू एंड द कैंडिडेट स्पेशली जो एनआरआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाह रहे हैं और जिन्होंने नीट एग्ज़ाम देते वक्त जनरल कैंडिडेट करके अप्लाई किया था एंड दे वांट टू चेंज देयर कैटेगरी फ्रॉम इंडियन टू एनआरआई. सो उसका नोटिफिकेशन काउंसलिंग शुरू होने के कुछ 2, 4, 5 एक हफ्ते पहले आ जाता है, तो आप उस पर ज़रूर नज़र बनाए रखिए. And the candidates, I will repeat it in English. That is, the candidates who are looking to participate as an NRI candidate, but while filling up the form for NEET, they registered as a general candidate, and now they want to change their category from Indian to NRI. The application to be made to the MCC to change their category will be notified, I believe, 7 working days prior to the beginning of the counseling. So, if we expect the counseling to start from 15th of July, so
By 8th, anytime between 8th and 13th, you will see that notification. And I hope you all have liked this information. Kindly be prepared with all the things by mid of July, or prior by mid of July. And thank you all. God bless you. I wish you all a very wonderful counseling period. And I wish everyone heartily all your dreams come true. And if you would like to have any guidance from us regarding admissions or paid counseling services, we'll be very glad and happy to help you. God bless you all. Happy thoughts. Have a wonderful counseling period. May all your dreams come true. Bye bye. Good night.